Guys, I am Pallavi Saxena. I have done MTech from NITTR and I have approximately 10 years of teaching experience. तो आज हम बात करते हैं साइंस की. Science, how it can be made interesting. What is science? Students, you know that every task or everything that we do has something to do with the science. Everything, your daily routine, you do brush, you take food, you cook food, you go with vehicles, you walk, everything has science to do with. Without science, today's life is very difficult. So I'll take a simple example, suppose of cooking, and I'll tell you how their science is involved in cooking and what science and maths are involved in that. Like suppose you are simply cooking any of the dish. You are cooking a aloo ki sabzi. Then firstly you will put the vessel or anything on gas, stove, induction, or you can do cook it in solar cooker. So the heat is taken in the form of radiations, conduction, convection. So here comes the physics in cooking. जैसे ही हमने हीट किया वेसल को, क्या आया? फिजिक्स. अब जैसे ही हमारी हीट एनर्जी पास होती है तो हम जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अपनी सब्जी में, सपोज कीजिए हमने सॉल्ट या फिर शुगर या फिर कोई भी एडिबल मटेरियल डाला, तो क्या होगा? उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स बनेंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी फूड बनाने के लिए. तो द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज केमिस्ट्री. यस. नाउ to prepare perfect proportion of ingredients is required. जरा भी अगर नमक तेज हो गया, मिर्च कम हो गई, proportion इधर उधर हुआ, सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा. So proportion, ratio and proportion, it is the maths involved in cooking. Now as we take the food, as we consume the food which is prepared by us, so the food which we eat, then what happens? The chemical reactions take place in our body, and then the food get converted into the juices, and the gets mixed with the saliva and break down in the simpler form to perform the digestion process. So chemical reactions means chemistry, and the process of digestion, excretion which takes place after eating the food is बायोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिर्फ खाना बनाने में ही फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ गई है. तो अब आप क्या करेंगे? अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को एक बार साइंस से रिलेट करके देखिए. एक बार देखिए, क्या ब्रश करने में कोई साइंस मैकेनिज्म है? क्या वॉक करने में कोई साइंस मैकेनिज्म है? एंड डू कमेंट in the comment section. Please like, subscribe my videos and share my channel. Thank you.